Thank you, sir. Thank you, sir, so much. Minister साहब ने बच्चों को already at ease कर दिया है, which is a very, very good thing. And we would extend a very warm welcome to our chief guest, the Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav ji. Thank you very much. Along with us are also some more eminent guests. Leena Nandan Madam, she is the Secretary of MOEFCC. Shri C.P. Goyal ji, Director General of Forest and Special Secretary. Shri S.P. Yadav ji, ADGF Project Tiger, and Member Secretary of the NTCA. Welcome you, all of you. Thank you very much for your presence. Along with them, we also have three people who have made this Tiger Anthem that Sir will be launching today possible. The Troika, that is Shri Subaya Nalamuthu ji, Shri Shantanu Moitra ji, as well as Shri Tanveer Ghazi ji. Without you, it wouldn't have been possible. And from the Times Group, we have Shri Kaustav Chatterjee ji, Brand Director, TOI and Languages, and Shri Vikas Singh ji, Executive Editor of the Times of India. And sir, you have already met. आज तो Tiger Anthem का launch है. So Tiger Cubs के बिना तो काम चलता नहीं था. तो we have these Tiger Cubs. आपने already उनके साथ interact कर दिया, and you have made them so welcome. I thought they were a little tensed, but आपके आने के बाद में they've been absolutely relaxed. And today definitely is a day of celebration, because the launch of this anthem is actually the reaffirmation of the success of Project Tiger. When it started, this beautiful animal was on the verge of extinction. But you look at what the government has done today, and our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, when he released the numbers, it was a celebration, absolutely a celebration no one could have imagined. And that is what we at the Times of India have also been celebrating with our special campaign called Saving Our Stripes. And we have undertaken multiple events, multiple activities through this particular campaign. And this is what we can call a finale of it, the launch of the special Tiger Anthem. And I think there could not have been a better person to launch this particular anthem. So thank you so much, sir, for coming. First, I would like to formally welcome and felicitate the Honorable Minister. I request Shri Kaustav Chatterjee ji to please come forward and felicitate the Minister. Sir. If you can have a round of applause, please, the Minister. Welcome with the traditional shawl. A special book and a plant. Yes. I also request Chatterjee sir to please welcome and felicitate Shri Leena Nandan Madam, Secretary of MOEFCC. So then, please. Leena ma'am, please. Welcome, ma'am. Also, we will be felicitating Shri C.P. Goyal ji, the Director General of Forest and Special Secretary. Shri Goyal sahab. And finally, Shri S.P. Yadav ji, ADGF Project Tiger and MS NTCA. The Saving Our Stripes campaign is about many things, but mostly it's about creating awareness about this special animal that we have in our midst and to help it grow. And I think the feeling has been best captured by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's statement, and I quote, Honorable Modi ji said, "It is part of Indian culture to protect nature. And the success of Project Tiger is a matter of pride not only for India, but for the whole world." So I think we deserve a round of applause for everyone who's present here. You are the guys who made it a big success, and it's absolutely a proud moment for India. At this point, I would like to invite Shri Kaustav ji to please share a few words. He himself is a wildlife lover and an avid bird watcher. So I'm sure that his perspective will come from that personal interest of his. Shri Kaustav ji. धन्यवाद। पहली बात तो आप सबका बहुत ही हार्टफेल्ट थैंक्स एंड अ वेलकम। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भूपेंद्र यादव जी, आपने अपना समय तो दिया ही,
but you've also given us the premises, to launch this film and this initiative. We are very grateful for that. I think your ministry is doing fantastic yeoman service for the nation, and it's an honor and a privilege for all of us to be here today to wrap up our campaign. Along with that, of course, I would also like to welcome and thank Ms. Leena Nandan, who's our Environment Secretary, our DG Forests, Mr. Goel, and our Member Secretary NTCA, Shri CP Yadav. Along with this, we have, of course, a star-studded galaxy today. The kids, thanks to our association with Teach India from across the country, they come from Chennai, Kolkata, Delhi. आपने तो वैसे भी पूछ लिया अभी उनसे. But apart from them, we also have Shri Santanu Moitro. He is a very, very acclaimed Bollywood music director. Needs no introduction, Three Idiots, etc., etc. We have Shri Subhaya Nalamuthu. He's an acclaimed film cinematographer, and I think 6 or 5 National Film Awards he's already won for his groundbreaking films in this sector. We also have Tanveer Ghazi, who has penned these beautiful lyrics, and we are all waiting very eagerly for the launch of this film, so all of us can enjoy them. So thank you very much. And again, all of you, to the kids and the guardians who have come, thank you everybody. See, we at the Times of India have always been at the forefront of conservation themes, environmental themes, whether it be trees, the air, water, climate, and it's not a recent phenomena. It's been there in the ethos for the last 185 years, reflecting the ethos of our country. Because the Times of India is also a reflection of the country and of its people and its aspirations. If you think about Project Tiger, I can safely say that this is now a global standard in conservation successes across the globe. And it's a historic moment actually, because in a country as populous as ours, for a conservation program like this to succeed despite all odds, and we have to remember that it started off in 1973, when India was not as powerful or as developed as it is today. So there were huge number of pressures from various fronts that a country needed, resources, for example. And yet, this is such a success. So when it's turning 50 years this year, we felt that it's time to tell its story. And it's also time to take this message to the country at large, to our countrymen. And I'll come to the reason we feel why it's so important. And as we all know, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji announced the tiger numbers on April 9th in Mysuru. With 3,167 tigers today in India, we now account for 75% of the global tiger population in the world. But now let this sink in. Times of India was there in 1973, so if we were to have a time machine and go back there on April 1st, then we would have seen this news, this landmark law that came into practice, which created the reserves that we have and started this movement. And since then, if you see, the Times of India has been tracking the successes and the failures of this particular program. Because a program like this is not just a unbroken success. There are so many learnings from so many failures that we have had. But at the sum and substance of it, if you think about it, what are we celebrating today in the 50th year? I think according to me, if you ask me, the fundamental thing that we are celebrating today is the change of a mindset. Because in 1973, an intention became law. And it reflected a resolve of the country that conservation will be a critical priority for our nation. And it reflected also the ethos of our civilization, where it's an inclusive growth, where we are part of this entire cosmos, we are part of this world. We are but one life form among so many other life forms in this world. So, why is it important to
relay its message across, because I feel that in today's times, with climate change, with the growing pressures of industrialization, with our growing population, there is a need for us to recalibrate, to see where we see this program going in the next 50 years. And I think the government, and especially, sir, your ministry, have planned several initiatives. And I think it's a very, very positive frame that we are talking or seeing all of these subjects in. Today's event, which is a high point, it's a finale, as the host also said, comes at the back of an entire package. We wanted to put this narration in front of everybody, in front of the country, so that there is greater consciousness about this message, about this change of mindset. Why do we need to protect wildlife? What is in it for us? Is there any economic gain? Etc., etc., right? And at least in our limited way, we've been able to curate and put together this entire program. There is a specific website that we have launched. All of it, you can enjoy this amazing content of experts, our own reporters, but basically the story, the great work that departments such as yourself, ministries such as yourself, and the departments that you control have been doing, and also individuals and NGOs and various other experts in the country have been doing. It's at www.savingourstripes.com. But सिर्फ अंग्रेजी बोलने से और ऐसे एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को इंटेलेक्चुअली एड्रेस करने से काम तो होगा नहीं. हमारे देश में जब तक आप हिंदी में बात ना करो, हमारी रीजनल भाषा में बात ना करो, तो आम आदमी तक वह मैसेज पहुंचेगी नहीं. और मैसेज पहुंचाने के लिए गाने का माध्यम, फिल्मों का माध्यम, कार्टून्स का माध्यम, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. तो हमने सोचा, एक तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा ये एस्पेक्ट था कि हम इसको बड़ों की नज़रों से क्यों देखें, इसको बच्चों की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में उन्हें यहाँ पे रहना है, इस दुनिया में रहना है, कंजर्वेशन आगे लेके जाना है. दिस वॉज द बिग आइडिया. सो आई मस्ट रियली थैंक शांतनु, नल्ला, Anay, his team member, and also Tanveer and Rohan, who's not here, and that we all collaborated. We didn't know how this film is going to turn out, how powerful it would be, but we felt that ये एक गिफ्ट हमारी तरफ से नेशन को जाना चाहिए, ताकि बच्चा इसको समझे, गुनगुनाए, और उनके जहन में ये बात एब्जॉर्ब हो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है हमारे लिए. आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही अपना टाइम ले रहा हूँ, तो मैं अभी I'll stop here. But I'll stop with a quote. Jane Goodall का नाम मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा. She is a world famous biologist and conservator. And she said, only if we understand will we care. Only if we care will we help. Only if we help shall all be saved. Thank you. Thank you, Kaustav sir. Very well said. You know, we were there when the Project Tiger started, और इसके आगे भी Times of India हमेशा इस पूरे कैंपेन के साथ में जुड़ा रहेगा. Before I proceed, I again want to just thank the Honorable Minister, because ladies and gentlemen, I'll tell you, आज इनका शेड्यूल बहुत ही पैक्ड है, बैक टू बैक मीटिंग्स, बट आपने समय निकाला और हमारे लिए आए, तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आप प्रॉमिस करते हैं कि ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे. मेरे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनके बारे में आपको एक खास बात बताऊं कि भारत के तो वो सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है, बट मुझे लगता है कि विश्व में भी है, विदाउट एनी डाउट. और ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग, ये सबसे कठिन फिल्म मेकिंग है, क्योंकि आप कितने भी बड़े नाम हो, कितने भी बड़े प्रोड्यूसर है, आपका जो एक्टर है ना, उसमें उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आपको एक्टर के पीछे पीछे भागना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको शूटिंग करना है. बहुत दूर से शूटिंग किया तो सीन अच्छा नहीं आएगा, और बहुत क्लोज चले गए तो मे बी इट विल बी योर लास्ट डे, सो यू नेवर नो. बट दैट इज द चैलेंज, एंड ऑल दीज चैलेंजेस मिस्टर नल्ला मुत्तू हैज conquered, and now he is one of the best known names in wildlife filmmaking. And जो Anthem आज सर रिलीज करेंगे, उसमें जो आप वीडियोस देखेंगे, अमेजिंग वीडियोस, बिल्कुल, and that is all through the lens that Mr. Nalla Muthu had mastered. So I request him to please come and say a few words. Thank you very much for everyone. Thanks, sir. I just take few minutes to explain the challenge which I've gone through while making this film. Everyone knows that wildlife filmmaking itself is a challenge. But normally what I do is,
everyone said, I do believe in storytelling. I produced 6 films, all self-funded films for National Geographic, Discovery, BBC, Animal Planet. I follow one particular character for 2 years, some are 4 years, some are 7 years, a family, till I get a story. So that's what all my film is, because I strongly believe in storytelling, emotionally from an Indian perspective, because normally if you see most of the Tiger films are international perspective. So all my films, if you see, most of them in OTT platforms. So emotion is the only thing I believe. That's the only way which we can tell a story to grassroots audience. All the stories are very basic, which is very, what do you call that? I mean, some Tiger I followed from birth to death. Some are from prime to death. Some are, so that's the way I do it. But the challenge in this film is, normally we used to do from 300 hours to we make 1 hour film. But here what happened, the challenge is suddenly I've got an opportunity to do a film, Anthem, the first time we are doing it. But everyone, this is the first music video. We don't want to look like put together shots of, put together some shots and try to put a music video on it. Our idea is to tell a story again, that to make it in 3 minutes. That's a big challenge. There are first video, which is a one single cup, which I followed for 7 months. So 7 months of footage, you try to put in 3 minutes and tell a story and an emotion and from a child perspective. When you see it, each and every shot there is a story behind it. There are some 50, 60 shots in one film. Some are 200 shots, some are 100 shots. The other video is, which is I followed the family for 2.5 years, put together a 2.5 year story into 3 minutes and tell a story through a child perspective. That's a challenge. I hope everyone like it, because end of the day, the child's perspective is one thing which I always wanted to tell, because that is the only thing which tells a great story. So I'm not a good speaker, so whatever I could communicate, I'm good in putting together visuals. You can see that. Thank you very much for the great opportunity for Times of India, because unfortunately we don't have our own wildlife channel in our country. We always have to depend on international channels. But this is the only platform which we want media should take over these subjects and take these stories to grassroots, so that we can tell great stories and save these tribes. Thank you very much. Thank you, Nalamatu ji. और जैसे आपने कहा, the next generation will definitely take it forward. You can see it in their faces already. They have loved it, so they will take it forward. My next guest is someone जिनकी धुन आप लोग ने कई बार सुनी होगी, चाहे वो मूवी रहे लगे रहो मुन्ना भाई, चाहे रहे वो पीके या इडियट्स, इसकी म्यूज़िक इन्होंने कंपोज की है, और जो एंथम आप सुनने वाले हैं और जो सर लॉन्च करने वाले हैं, ये भी इन्होंने किया है. शांतनु मोइत्रा जी, his love affair, if I may use the word without getting you in trouble with your wife, his love affair with tigers started in Ranthambore. So the moment he just saw that tigers and cubs, he was mesmerized and left speechless. But today I think we can have some speech out of you. I request you to please come and share your views with us. Namaskar, Honorable Minister and esteemed, eminent guests. यूजुअली मेरा काम होता है कि बॉलीवुड के जो सुपरस्टार होते हैं उसके साथ उसके बीच हमको गाना क्रिएट करना पड़ता है, पर मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है. द टाइगर इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार आई हैव कम अक्रॉस. और इंटरेस्टिंग बात है कि इससे भी बड़ा कमाल का सुपरस्टार ये छोटू है, जो बिल्कुल वाइड आइड देख रहा है, उसको सब कुछ खूबसूरत दिख रहा है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं. You are our future, you are our superstars, right? And the interesting part है कि इस छोटू को नहीं पता कि उसका डेंजर भी हम हैं, उसका सेवियर भी हम ही है. अभी हमको चूज़ करना है हमको क्या करना है. एंड आई थिंक दिस मैसेज वॉज बेस्ट अंडरस्टूड अगर आई कुड क्रिएट अ सॉन्ग. शायद मेरे लिए सबसे कठिन गाना है ये, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना ज़्यादा है दैन इंस्टाग्राम लाइक्स एंड फेसबुक लाइक्स इन द मूवीज़ दैट आई डू. दिस इज़ रियल. अगर एक भी इंसान एक सहानुभूति के तरफ से इस टाइगर को देखता है, देन आवर जॉब टू क्रिएट दिस एंथम इज सक्सेसफुल. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. और फाइनली द मोमेंट ऑब्वियसली दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर उसमें, और आप जानते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यादव साहब मंत्री हैं, ही इज़ ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट. ये बहुत कम लोग जानते हैं. ये पर्यावरण प्रेमी भी है.
ये उतना ही बार, तो इट्स लाइक पैशन एंड वर्क आपको एकदम साथ में आ गया. सो दिस डेफिनेटली इज समथिंग दैट द एंटायर मिनिस्ट्री इज बेनिफिटिंग एंड द एंटायर कंट्री इज बेनिफिटिंग. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट सर इज हियर. व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज नाउ फॉर सर to please launch the anthem officially. Already so many views on the teaser album. 2 दिन में sir लाखों views आ चुके हैं. अब now बस at the click of sir's button we will get it officially inaugurated. I'll move out of the way so that everybody has a better view. खेले रे तंदना 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 सीधी साधी ये खुशियाँ तंदना 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 तेरी मेरी ये दुनिया मुझ तेरी प्यारी है मुझ तेरी न्यारी है काली काली धारी है थोड़ा थोड़ा वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. और मैं देख रहा था कि जितने स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीच इंडिया एफिलेटेड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इन लोग इतना एंजॉय कर रहे थे. एंड आई यू आर द वंस हु स्टार्टेड द क्लैप थिंग ना, यू गॉट इनटू द रिदम. और दूसरे जो थे जिनको मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, यादव साहब को, क्योंकि वो सिर्फ मुस्कुरा भी नहीं थे, साथ में उनका फुट टैपिंग भी शुरू था. तो सर हैज़ रियली एंजॉयड दिस, बहुत ही अच्छा रहा. एंड एज वी से दैट एवरी गुड मोमेंट हैज़ टू बी कैप्चर्ड ऑन कैमरा, सो लेट्स नॉट मिस दिस मोमेंट. First, I will request the Honorable Minister to please join me on the stage. Along with him, the 3 people who made this anthem possible, Tanveer Ghazi Saab, Nalla Muttu Saab, and Moitra Saab. Please, if you can join them for a special photo op. And I request all of you to stay on the stage, and our tiger cubs now will come. All the tiger cubs, please come forward. Please come. Everybody else will remain on the stage.
सर एक रिक्वेस्ट, थोड़ा सा अगर वहाँ शिफ्ट है, थोड़ा सा बच्चे, बस बस उतना ही सर, दैट्स इट। किड्स यू कैन ऑल कम हियर दिस वे। और कोई टाइगर कप कहीं पीछे नहीं? और सबकी साइटिंग हो गई है, वेरी गुड। यस यस, दे आर प्रोटेक्टिव ऑफ द किड्स एनीवे। हाँ अच्छा, नहीं बट टाइगर कप मजा नहीं आ रहा। टाइगर कप के जैसा स्माइल आ गया है, टाइगर कप जैसा एक एक्शन भी तो दिखाओ, कैसा करता है टाइगर? यस कम ऑन, लेट्स हैव वन पोज विद दैट। यस, फ्रेंडली पॉज, ये हुई ना बात। Wonderful, wonderful. I request everyone to just stay on the stage, and I request Times of India के team से श्री विकास सिंह जी and श्री कौस्तव चैटर्जी जी to please come and join us on the stage. Vikas sir, Kaustav sir, please come. Wow, amazing picture. Thank you so much. I request everyone except the Honorable Minister to please take their seat, because we want the Minister to please share a few words with all of us, sir. Please. थैंक यू वेरी मच। वैसे भी इतना अच्छा गाना सुनने के बाद भाषण का मूड नहीं रहता, और गाना भी बहुत अच्छा है, वर्डिंग बहुत अच्छे हैं, सीधी सादी खुशियाँ, सबसे सिंपल लाइन है लेकिन सबसे ब्यूटीफुल लाइन है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि टाइगर नेचर के साथ रहना सिखाता है, तो खुशियों के लिए हमको कोई बाहर नहीं जाना पड़ता है, कम से कम टाइगर को तो कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। जो नेचर का दिया हुआ उपहार है, उसी में रहना ये टाइगर का स्वभाव है। दुनिया में जो पावरफुल आदमी होता है, उससे सब इसलिए डरते हैं कि वो सबसे पहले अटैक करता है। पर आप कभी भी जंगल में जाके देखना, टाइगर आगे बढ़ के कभी अटैक नहीं करता। इवन अभी 2-3 दिन पहले हम लोग राजा जी में एक टाइग्रेस को रिलीव करने गए थे, तो 3 हाथी गए थे। तो शुरू में उसने अपने आप को सोचा कि चलो कोई आए होंगे, लेकिन जब उसको लगने लगा तो फिर उसने पोजीशनिंग ली, तो हम देखते रह गए, 3 हाथी एक टाइग्रेस की पोजीशन से डर गए। ये पावर होती है। और इसलिए नेचर का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम में और टाइगर में एक ही अंतर है, हमारे पास फ्रिज है, उसके पास नहीं है। इसलिए हमारे पास ग्रीड है, उसके पास नहीं है। और इसलिए स्टार उसको देखने जाते हैं, वो स्टार को देखने नहीं आता, क्योंकि उसको ग्रीड नहीं है, ना नेम की, ना फेम की, ना पावर की। उसके पास केवल नेचर है। और इसलिए कई बार आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ऐसे मिलेंगे, इसमें भी है, जैसे भालू आया तो वही अपने आप भाग गया, टाइगर ने इसमें पूरे जो आपका फोटोग्राफ है वो अपने आप गया। कितना आपको ऐसे फोटोग्राफी मिलेगा कि जो दूसरा जानवर खड़ा एक बार शिकार करने के बाद, बहुत अच्छे फोटोग्राफ मैंने देखे थे कि टाइगर भी पानी पी रहे और पूरा बारहसिंगा का ग्रुप भी हुआ, कि एक बार शिकार लेने के बाद फिर टाइगर किसी को छेड़ता नहीं है। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री का ये जो मोटो है कि नेचर के साथ हम लोग जुड़ना सीखें, इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन की ओर हम लोग जाएं, हम भी सुरक्षित रहें, नेचर भी सुरक्षित रहे। और इसलिए दुनिया ने बायोडायवर्सिटी कॉप में जो तय किया है 30/30, एटलीस्ट 30% तो सी का एरिया और पृथ्वी का एरिया बाकी स्पीशीज़ के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसी धरती की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो,
पेड़ नहीं हो, पर्वत नहीं हो, केवल हम ही हम बैठे हों, खाली मनुष्य हो, तो नेचर कभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नेचर सबके लिए है, नेचर सबके एग्जिस्टेंस के लिए है। आज सुबह मैं जो भारत बांग्लादेश के बीच में हमारा जो एक सुंदर टाइगर रिजर्व है सुंदरबन, उसके प्रोग्राम के लिए गया था। और सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का भी एरिया है, वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर एक कहानी चलती है बनो बीबी, बन देवी की, कि एक ऋषि था और फिर उसको ताकत पे लगा, फिर उसको लगा जंगल में कोई नहीं घुसना चाहिए, तो फिर वो टाइगर बन गया। उसका नाम दक्षिण राय रखा। लेकिन वो लोगों को परेशान करने लगा, तो लोगों ने प्रार्थना करी नेचर से, तो नेचर वहाँ पर बनो देवी। और इसलिए जो नेचर से ऊपर पावर रखता है उसको नेचर पनिश करती है। हमारे मिनिस्ट्री का भी मोटो यही है, प्रकृति रक्षिता रक्षत। जो नेचर को प्रोटेक्ट करता है, नेचर उसको प्रोटेक्ट, और उसका वहाँ बाकायदा टेम्पल भी है बनो देवी, उसकी प्रेयर्स भी हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू में, एथिक्स में कितना ज़्यादा हम लोग नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि दुनिया में पेरिस एग्रीमेंट में भी मदर अर्थ को एज ए स्टेटमेंट में मान्यता दी है। और उन्होंने कहा है कि वी वैल्यू दोज कंट्रीज हु हैव ए सिविलाइजेशनल एथिक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रे टू द नेचर अर्थ, मदर अर्थ। सो ये जो अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है, इनको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर जान लें, कितना ही आगे बढ़ जाए, खुशियाँ सीधे साधेपन में है, और वो नेचर के साथ ही है। और इस अमेजिंग फिल्म के लिए, इस म्यूज़िक के लिए मुझे विश्वमोहन जी ने कहा था, तो मैंने तो कैंटीन इसलिए कही थी कि सब कैंटीन में एक बराबर बैठेंगे, और इनफॉर्मल हो तो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे मंत्रालय में इस पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, सबके लिए बहुत आप लोगों का स्वागत है। यहाँ जो टीचर्स और स्कूल आए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का एक हमने कैंपेन शुरू किया है, एक पोर्टल बनाया है मेरी लाइफ। तो अपने स्कूल्स में बच्चे भी, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में क्या ऐसा कमिटमेंट किया है जो मैं मेरी लाइफ पोर्टल पे डाल सकता हूँ। हमारे इस कैंपेन से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम को, जिन्होंने क्रिएटिव आर्टिस्ट ने बनाया उनको, जो बच्चे बाहर से आए हैं उनको, उनके पेरेंट्स को, टीचर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्रालय में आप सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने ये बात भी कही कि हमको पृथ्वी में दूसरे जीव के लिए भी जगह छोड़नी ही पड़ेगी, इस तरह से हम आगे बढ़ नहीं सकते। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ ऑल अबाउट, टेकिंग एवरीवन टुगेदर। एंड नाउ आई कॉल अपॉन श्री विकास सिंह जी टू प्लीज डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। विकास सर। Good afternoon. On behalf of the entire Times of India family, it gives me great pleasure to thank all of you. Honorable Minister, sir, thank you so much for taking the time to be with us. For 185 years, the Times of India has been deeply committed to the cause of environment and wildlife, and your inspiring words, Minister, sir, will motivate us to redouble our efforts in this sphere. Heartfelt gratitude to our eminent guests, Leena Nandan ma'am, Shri C.P. Goyal sir, Shri S.P. Yadav. Your presence here today matters a lot to us. Thank you so much. To the creative team, Mr. Nala Mattu, Mr. Shwantanu Moitra, Tanveer Ghazi. You guys have created pure magic. You know, this anthem will move millions of hearts. This is going to be watched and rewatched countless times. And we feel incredibly privileged that we were among the first few to see it. A big thank you also to Teach India for getting affiliated schools from all across the country. Thank you to all the kids who are here and to the teachers and the parents.
We really hope that you will take this message and spread it across the country. Thank you. Thank you, Vikas sir. And with this, we end today's event. Thank you so much. एक और एंथम बिल्कुल स्पेशल रिक्वेस्ट पे एंथम एक बार रिप्ले किया जाए. बिल्कुल, ये तो सवाल ही नहीं उठा. दो, सेकंड वन और थर्ड वन. हाँ, सेकंड एक बार, सेकंड वन लिया. किड्स, आपको कैसा लगा? मजा आया? एंथम अच्छा था? हाँ. और एक जो सर ने कहा कि मेरी लाइफ में हम क्या कमिटमेंट करने वाले हैं एनवायरनमेंट के प्रति हो, ये इस पे आप लोग करेंगे सब? हाँ, पक्का? हाँ, ऑनलाइन अब दिखना शुरू हो जाएगी ना एंट्री हमको? बिल्कुल. और आप में से किस किस ने टाइगर की साइटिंग की है वाइल्ड लाइफ में? ओके, चलिए बाद में बात करें. तंदना 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 सीधी सादी ये खुशियाँ. तंदना 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 तेरी मेरी ये दुनिया. ये हवा बातुनी, ये सुबह साबुनी, धूप है गुनगुनी, पानियों में दरियों ही रे. तंदना 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 सीधी सादी ये खुशियाँ. तंदना 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 तेरी मेरी ये दुनिया. हिली है डाली, बची है ताली, क्यों मोर कोई ना चरे. हिली है डाली, बची है ताली, क्यों मोर कोई ना चरे. कोई गिलहरी करे कचहरी, चोरी हुआ है दाना रे. ये पहाड़ियाँ हरी झाड़ियाँ, ये तो यूं ही रहेगी नवा. ये दोपहरी है जो सुनहरी है, ये तो यूं ही रहेगी नवा. आजा तू मोटू रे, आजा तू छोटू रे, माटी पे खो खो खेले रे. हाँ? तंदना 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 सीधी सादी ये खुशियाँ. तंदना 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 तेरी मेरी ये दुनिया. पूछ तेरी प्यारी है, मूछ तेरी न्यारी है, काली काली धारी है, थोड़ा थोड़ा जिल रे. तंदना हिंदी में एक कहावत है, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीसरा भी प्ले होगा बच्चों के बेनिफिट के लिए. सर थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए. धन्यवाद. थैंक यू टू